Good morning, friends. Pluto Star. It's an indicator in TradingView that I published some time back in the public library of TradingView, along with the source code, so that people can see how it works, what is the logic behind it, and all those things, right? I posted it on Twitter also, after which I started getting some queries on how to use it, what is the logic behind it, what should be the conditions, and all this. So along with the indicator, I posted the rules to be followed, the rules that I could understand that works best with the indicator. Still कुछ confusion है, people still have some confusion, so I thought कि एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर. पहले दिखाते हैं where is the trading view indicator and how you can get it in your charts. So let's go to trading view. If I go to indicators, type here Pluto Star Bollinger Band Trap from Moti Rakam, and if you click here before I apply, just say click read more. You can see all the details here. Description, what is this, what are the rules, see what makes a Pluto Star appear on a chart, and then what is a tradable signal. It is based on Bollinger Bands and all this. There is a whole source code there, so you can easily understand. If you understand a bit of Pine script, it's very easy to understand how it works, what is the logic behind it. I'll explain it. If you don't understand Pine script, I have already made a video, जाके देखो उसको, ज़रूर अच्छा लगेगा. बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है कि एक इंडिकेटर कैसे बनाते हैं. ठीक है. So before we go and understand how Pluto Star works, और हम इसको लाइव चार्ट पे लगा के देखें कि how trading signals can be caught using Pluto Star, I'll try to explain in brief कि इसके पीछे का concept क्या है, what is the concept it works on. ठीक है. I understand most of us in corporate world and people who have gone to management studies, they must have seen this chart many a times in their courses and books and internet, and all the corporate friends, they must know it, right? It's called normal distribution curve or bell curve, popularly known as bell curve also. हम इसका technical nitty-gritties में नहीं जाएंगे, right? We don't have to. What it explains is that there is a mean. I'll try to relate the whole concept with the stock market or the price action. So there is a mean price. Mean का मतलब है कि fair value of the price. Fair value of the price could be, most of the people assume it's 20, and that's what the 20 DMA or 20 moving average is the fair value of the price. And people also popularly call it the magnet line. Price generally comes back to 20. Whenever it moves away from 20, after some time it has to come back to 20, or if the momentum is too strong, price time correction करेगा वहां पे, and 20 will move towards the price जब आपका flag बनता है, right? Okay, so let's understand this. If mean, in case of Bollinger Band, mean is your 20 simple moving average. So when the price moves away from the mean, moves away from the mean means it deviates from the mean. जब वो deviate होता है, when the deviation is 1, it moves 34.13% on both sides. This is the whole range. 68.27% is the whole range of the standard deviation 1. Simple language में समझे तो, if you take an example of counting height of all the people, ठीक है, हमारे society में, हमारा state में, हमारी country में, if you try to understand what is the height of people. So what this concept says, normal distribution curve suggests is that 68% of the people will fall into this category. Means जो भी height है 5.5, between 5.5 and 6, जिसमें कि हमारे इंडिया के शायद 68% लोग उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, right? The majority of the people will fall into this category. अब इसी एग्जांपल को अगर मैं स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में लूं, 68.27% टाइम्स प्राइस यहीं पे मूव करेगी, इसी रेंज में मूव करेगी. बॉलिंजर बैंड टेक्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2, राइट? व्हाट इट सजेस्ट इज दैट जो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 जब हम लेते हैं तो प्राइस का रेंज बढ़ जाता है 95.5%. व्हाट इट सजेस्ट इज कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो मीन से 95.5% इसी रेंज में मूव करेगा. प्राइस इससे बाहर सिर्फ 4.5% टाइम्स के लिए जाती है. इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइस यहीं घूमेगी. अगर वो अपर बॉलिंजर बैंड को हिट करेगा तो इट्स वेरी लाइकली दैट विल कम बैक टू मीन.
और अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है तो यू विल सी द वॉक ऑन द एज जिसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड का. इफ यू डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट यू कैन चेक इट ऑन गूगल और यूट्यूब. बॉलिंजर बैंड के बेसिक्स हैं. व्हेन द प्राइस स्टार्ट्स मूविंग ऑन द एज, दैट्स कॉल्ड द वॉक ऑन द एज. बहुत स्ट्रांग मोमेंटम होता है तो वॉक ऑन द एज होता है. बट अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के कॉन्सेप्ट से ले, प्राइस हैज टू कम बैक टू द मीन. इफ इट डजंट, प्राइस विल स्टे देयर और मीन प्राइस के पास चला जाएगा. जब आप देखो कि फ्लैग बनेगा और फिर प्राइस फर्दर विल मूव अवे फ्रॉम द मीन. सो what Bollinger Band suggests is कि 95.5% टाइम्स प्राइस जो है वो इस रेंज में ही मूव करेगा जो Bollinger Band की रेंज होती है. तो जब भी प्राइस इससे बाहर चली जाएगी, ठीक है, कंप्लीटली बाहर चली जाएगी, तो इट हैज टू कम बैक टू द मीन. In most of the cases, 95.5% times, it has to come back to the mean because it has gone too far from the mean. कभी कभी ऐसा होगा कि the price जो है price action is too strong, momentum बहुत ज़्यादा है, so it may not come back. ठीक है, और वो और ऊपर चली जाती जाएगी. इवेंचुअली इट हैज़ टू कम बैक. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वहीं रहेगी, इट हैज़ टू कम बैक. बट ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की वजह से नहीं आए. तो प्लूटो स्टार कंसीडर्स ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, टेक्स ऑल दीज फैक्टर्स इनटू अकाउंट बिफोर generating a tradable signal. So let's go back to trading view and see how it works there. First, let's go and search for Pluto Star. Pluto Star, Bollinger Band. If you click here, read more, you will see I have also recommended, right? Test it with Nifty and Bank Nifty on 30 minutes and 1 hour time frames. Okay, so let's apply it first. Let's move to 1 hour time frame first and see if there were any Pluto Star signals. We don't need all these, so let me remove them. Right, so before we start with Pluto Star, let me get Bollinger Bands also here just to explain how it works, right? So so what is this Bollinger Bands? Bollinger Bands is 2 standard deviation and this mean line is nothing but a 20 standard moving average. So Bollinger Band suggests कि ये जो price है, price movement will always remain in 95.5% times इस band की range में ही रहेगा. और ये आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड वॉक ऑन द एज. जब प्राइस जो है बैंड के एक एज पे वॉक करती है, अपर साइड और लोअर साइड, यू विल सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, टू वॉक ऑन द एज. आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस कि यहाँ पे प्लूटो स्टार बना बट इट वाज नॉट अ ट्रेडेबल सिग्नल. व्हाई? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Bollinger Band की अब हमको जरूरत नहीं है. I was just trying to explain you the concept behind Pluto Star. Now you see why there is a Pluto Star here, because there is a candle that opened and closed outside of the upper band or the lower band. जो बॉलिंजर बैंड की रेंज के बाहर जो प्राइस पूरी तरह बाहर चली गई, इट मींस यूनिवर्स जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें प्लूटो की तरह बाहर चली गई है, राइट? द प्राइस इज gone above or beyond the 95.5% range, which means that it has to come back. It's like the rubber band, जैसे स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हो वॉक ऑन द एज हो रहा है, राइट? देयर इज अ वॉक ऑन द एज. तो रबर बैंड स्ट्रेच हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया और फिर बढ़ती गई प्राइस एंड इट फाइनली इट रीचेस द एक्सट्रीम ऑफ द रबर बैंड. और फिर जब आप रबर बैंड को छोड़ोगे तो क्या होगा? मिनिमम इट विल कम बैक टू द मीन, राइट? और अगर बहुत ज्यादा आपने उसको स्ट्रेच कर दिया था, ठीक है, तो वो बैंड के दूसरे एंड पे भी जा सकता है, यानी कि प्राइस जो है बैंड के दूसरे एंड पे भी आ सकती है. बट इसको थोड़ा इजीली टर्म्स में समझाने के लिए मैंने इसमें क्या किया है, 5 का मूविंग एवरेज यूज किया. यू सी दिस ग्रे लाइन, दिस इज नथिंग बट दी 5 EMA. तो अब चलो थोड़ा समझते हैं कि हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द बेसिक रूल्स, राइट? Red star means there is a short call, green star means there is a long call. And when the star appears on the chart, it doesn't mean there is a trade. It just suggests that the price has gone beyond the Bollinger Bands range. Let's wait and watch if the price comes back to the mean. It means price has to reverse from there, from that point. अगर reverse नहीं कर रहा है, it means the momentum will continue और जो walk on the edge जो चल रहा था, that will continue with it. इसलिए वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेडेबल सिग्नल. स्टार का मतलब ये नहीं होगा कि ट्रेड लेना ही है, राइट?
So यहाँ पे if you look at this, what are the things here? You can read it in the library also. Notes में दिया हुआ है मैंने, but you can I'll explain it here. There is a range of the signal. This is just something that I could think of. आप अपना इसको change कर सकते हैं. Range of the signal means जब star appear होगा. Star first of all, star will appear on the next candle. Because I want to ensure कि जब भी ऐसा हुआ है, whenever the price goes beyond the Bollinger Band range, the next candle I want to ensure doesn't break the high of it, high of this. In this case, it's a red, otherwise the low of the previous candle. So this candle doesn't break the high of it. It means the price did not go up from there. There is a possibility the price will go back to the mean. तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल फॉर्म हो जाती है यू विल सी अ स्टार अपीयरिंग ऑन द चार्ट एट द सेम टाइम स्टार के बाद 5 कैंडल्स का एक रेंज बनाया है सो इफ यू लुक एट दिस 1 2 3 4 5 ये जो रेंज है 5 कैंडल का रेंज इज सजेस्टिंग कि अभी प्राइस फ्रॉम दिस स्टार right after the Pluto appeared the price should close below 5's moving average. Closest moving average वही समझ आया मुझे. You can use VWAP also. जब प्राइस 5 के नीचे क्लोज हो जाता है it means there is a very strong possibility कि यहाँ से price will reverse to the mean. For example in this case यहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया यहाँ से हमने देखा this gray line is nothing but 5's moving average यहाँ से प्राइस रिटर्न किया इसके नीचे क्लोज हो गया we got a signal which we are supposed to sell here. At the same time, we are also supposed to take care of our risk management क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है आप क्या इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड करेंगे this line will act as a stop loss also that you have to understand right you have to go for the right signal say 1 hour is a big time frame for you क्योंकि 1 hour में definitely your stop loss थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा and so you can try with other time frame though I have suggested 30 minutes but somebody sent me a message on Twitter saying कि ये 15 minutes Nifty पे भी बहुत अच्छा काम करता है तो we will check that also but at the moment just try to understand this what I have realized is कि ये आपको 1:1.5 1:2 easily दे देता है in most of the cases में कैसे चेक करते हैं it's such a short position so if I take a short position at the close of this candle and if this is my stop loss right if this is my stop loss I then and if I take 1:1.5 this is your 1:1.5 right like sorry then this is my stop loss so my 1:1.5 should be here in most cases it is supposed to give us at least 1:1.5. Now look at this. Why there was no tradable signal? Because after the Pluto star, koi bhi candle did not close below 5's moving average. So we'll simply ignore it. There was no tradable signal, though there was a star. Star का मतलब क्या हुआ कि Bollinger ये जो कैंडल है ये Bollinger Band की अपर रेंज के बाहर ओपन हुई बाहर ही क्लोज हो गई right and the next candle did not break the high of this लेकिन जो इसमें तो उसके बाद if you see price kept on moving upwards ये क्या है it's called the walk on the edge of the Bollinger Band मैंने बताया ना जब strong momentum होगा तो it may not come back now look at this one this was a very good tradable signal यहाँ पे आया if I again try to take the short call from here right after the close of the candle I would have taken it so if I take this here this is my stop loss and if I take 1:1.5 I would have got 1:1.5 here right here let's see this one if I understand it right this is the fifth candle right after the star 1 2 3 4 5 signal के range में close हुआ 5 के नीचे but I got the stop loss hit ठीक है there's not no holy grail here momentum strong था चला गया ठीक है now look at this one again I within the signal range a candle closed below 5 and then we have to sell from here if I sell from here at the close of this candle I should wait for my 1:1.5 minimum right okay so what I understood from some
some friend that it really works great on 15 minutes. Nifty 15 minutes. Let's see Nifty 15 minutes. There was a signal, no candle closed below 5, but this candle within the signal range closed below 5, and I think it has given very decent. Now look at this one. Within the signal range, no candle closed below 5, so we can simply ignore it. This is not our trade. If I go back, now look at this one. Look at this one. This candle within the signal range closed below 5, but then it started moving up and there was a strong momentum. See the walk on the edge, and then we got the stop loss hit. Now look at this one. This one, again, we got a good signal. One candle closed below 5. We could have traded this one. You can add as many conditions, parameters as you wish. No signal, no candle close below 5, no candle close below 5. There was strong momentum. Now look at this one. First time we got the buy signal. So first Pluto Star appeared here. It says it should go back to mean now, but no candle closed above 5. यहाँ पे 5 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, नहीं हुई. Now look at this one. यहाँ पे फिर से प्लूटो स्टार आया. क्या कोई कैंडल 5 के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन दिस वाज एक्चुअली नॉट अ ट्रेडेबल सिग्नल. तो क्योंकि आप ये तो नेक्स्ट डे गैप अप खुला है, तो नॉट अ ट्रेडेबल सिग्नल. हम कहने को कह दें लेकिन ट्रेडेबल नहीं है. नाउ लुक एट दिस. दिस वाज अ ट्रेडेबल सिग्नल. यहाँ पे आया. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि 15 मिनट चार्ट है, बहुत कम होगा आपका स्टॉप लॉस. 50 रुपीज से 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा. राइट, लुक एट दिस वन. No candle closed below 5 within the signal range. 6 candle ने close किया, but you can decide. See, I just thought, okay, what should be the right waiting period for me. Now look at this one. The last candle closed and the signal closed above 5. So I hope आपको Alright, so I hope आपको समझ आया होगा, थोड़ा ठीक लगा हो. We can also try it in Bank Nifty. If I see Bank Nifty, same 15 minute chart. Now look at this. This candle within the signal range, one candle closed below 5, which was our trade signal. Right? यहाँ पे trade signal generate हुआ. And if you look at the shape of the candle, it's very positive. जो हमें बता रहा है कि there is a good supply wick. It's very likely that price will go at least up to the mean. ठीक है? But you have to wait for the signal. Don't jump into it. Right? Now look at this. यहाँ पे हमें नहीं मिला. Right? See, we must have got a stop loss hit here. But this one was really good trade. This one, no candle closed above 5 within the signal range, so that's ignorable. There is no. And if you look at this, now this one, no candle closed above 5, so that's ignorable. No candle closed below 5, that's ignorable. जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि सिग्नल जनरेट नहीं होता. ट्राई करो आप विद डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. कमोडिटी में ट्राई करो. आई ट्राइड इट इन सिल्वर ऑन 4 hour चार्ट. वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ट्राई करो. देयर आर डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. कोई और इंडिकेटर के साथ ट्राई कर सकते हैं कि मोमेंटम जब बहुत पीक पे चला जाए, लाइक ADX हैज रीच्ड 50 एंड देन यू सी अ प्लूटो स्टार, देन इट्स वेरी लाइकली कि वो आना चाहिए नीचे. राइट? RSI है 80 हिट कर गया है, and then you see a Pluto star there. So I'm sure you'll be able to find good trades. You'll be able to understand how to use this. Thank you very much.